Okay, Ji, thank you very much, dear students, for joining me today's session. My name is Hameed, sir, and on behalf of Institute of Freelancing and PF School, I welcome you all. अच्छा जी, आज का lesson is a very interesting just because of two things. One is that we are going to recap our session first, and the second is we are going to complete Photoshop in just 10 minutes. Okay, so आप लोग recording भी हो रही है, so you can go through it at the later stage. लेकिन there is no interruption, there is no question, there is no hand raise, and the question answer would be at the end of the session, correct? So let's get started. First and foremost, we are talking about right now in which tool we have. While looking at this toolbox and these things, you can very easily say that it's a Photoshop. Okay, so let's get started. Photoshop. So very easily, let me select this one, and let's do this. So we are starting with this Photoshop first. Okay, G. So the first concept which you must have to remember, and that is Photoshop's icon is PS, means photo, and S stands for shop, correct? And the total age of this software is approximately 36, 37 years old. So it's a very old software, and always the number one softwares if you are interested to do anything with the pictures, correct? So that is second thing. Now step by step you have to remember that हमने क्या क्या चीजें इसमें लर्न की थी और हम कैसे उसको याद रख सकते हैं. This one lecture you will remember for all the times to come, क्योंकि इतना quickly हम जल्दी से करते जाएंगे. That's the menu at the top. That is the first thing. That is the toolbars at the left side. आप इसको चाहें तो आप जल्दी से ड्रैग करें, या लेट्स मेक इट एज अ सेपरेट वन. और अगर ड्रैग करके इस कॉर्नर पे लाएं, सो यू कैन मेक इट इन दिस, इसको फिक्स कर सकते हैं. क्लिक ऑन दिस एंड इट विल बी लाइक दिस. अगर आपकी मॉनिटर कंप्यूटर की रेजोल्यूशन इज स्मॉलर, देन यू क्लिक दिस और ये हाफ ऑफ द पोर्शन आपके सामने बच जाता है. अदर देन दैट, on the right side, that's the panel window जिसमें different चीजें, like for example layers, like for example channels, इसी में, and then the paths. These are different tabs. आप इसको choose close करें, that's a one tab, that's the text related tab, and that's the brushes and these are different type of tabs which are available, and that's the adjustments, by the way. Okay, G. So let's get started. Let's suppose we are working right now in this Photoshop. So here is the first layer, that's the background layer, correct? So how can you open this any kind of image? Let's suppose we go to this file and create a new. That is first thing. New से new window open करेंगे, and file से जाएंगे open, and open से कोई भी चीज open कर लेंगे, correct? So that let's suppose मैं ये shortcuts of this Photoshop open कर देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ. आई वुड रिक्वेस्ट आलिया टू प्लीज रिमाइंड मी कि मैं इसके बाद आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा, राइट? So that is the way you can open any sort of document from this open panel, right? There's nothing as such is to be worried. Give open recent, that's a complete list जो जो कुछ आपने किया. Open as smart object, open as something, very basic things, correct? But if you are interested, let's suppose if you are interested कि इसी के अंदर मैं कुछ और प्लेस कर दूं, like for example this is one background layer, तो इसी के अंदर कुछ चीज प्लेस करनी है, तो that is quite obvious. फाइल से जाएं प्लेस से जाके दोबारा कोई भी चीज ओपन करें. let's suppose that's the shapes I'm interested to place inside somewhere in this document. That's what we can do. Now double click, press OK or enter, or escape any key to revert this or reject this, the image we placed. Actually, how to create new layers? Very simple. F7 is the shortcut key. Press F7 and here is the shortcut key. Otherwise, right panel. And there is another way. कोई चीज आपकी open ना हो रही हो, go to this window and you can find out there are different things that includes the paths and layers and masks and paragraphs, means text related, those sort of things that can be available from here also, correct? So let me do one more thing, and that is I requested please Ivan, no question today. Acha ji, let's create a new layer. Very simple. Creating a new layer means creating a new layer. Let's start from here. Click on this panel at the bottom. That's the new layer. From here you can create any layer, and alongside with this there's a dustbin. That means delete a layer. Delete, click, and that's how you can delete it, correct?
Okay, so let's move towards the left side, and that is the tools panel. Tools panels mein, that's the first, that's arrow means you are, if you are interested to move anything, so you can move it. For example, I'm interested to move this PS from here to somewhere here, but that's in the complete one layer, correct? So I might not be able to move one. Moreover, it will give me an error when I'll try to move it because it's already locked. For example, ये देखिए मैं इसको drag किया, could not complete your request because the layer is locked. So lock को open कैसे करना है? Just double click on it and press OK. Here we go. Now you can move it anywhere, correct? Left, right, at any time you can move from any place. Further, let's, what is the next? That is the rectangle tool. Rectangle tool क्या करता है? Let's suppose I am interested to do something like this. For example, मैं यहाँ से इसको select करके, let's make a copy of this, Control C and Control V, and into the layers panel you can review that layer 0 के ऊपर there's a layer 1 which is right now available. You can move it, you can place it anywhere. Let's suppose you are interested कि हम मैं exactly इसके ऊपर रख दूँ, and further experiments के लिए हम इसके ऊपर बाद में. That is one thing. The second thing इसी के अंदर, if you click for more than a second, you can find out a circular tool. There are two ways you can do it. One is कि circular tool say you can create circle as well as you can select anything, correct? For example, I'm interested कि इतने सारे area में जो भी चीज़ है that's got selected and something like this. So that is something which you can easily with the help of these basic tools you can create. उसके अलावा द थर्ड वन इज द lasso टूल. Lasso टूल क्या करता है? इसके अंदर भी तीन है. वन इज द lasso टूल, दैट इज अ काइंड ऑफ ए मैनुअल काइंड ऑफ टूल जिसको आप सेलेक्ट करते हैं, एंड फॉर एग्जांपल इतनी सारी सिलेक्शन को आप यहाँ से कुछ भी इसके अंदर कलर प्लेस करना है या वट जो भी आप करना चाहते हैं, यू कैन डू. दैट इज वन वे. द सेकंड इज कि इसी के अंदर दैट्स द पॉलीगोनल लेसो टूल. मींस straighten shift की से you can go to this and let's suppose यहाँ से start और ending point आपने clean कर लिया. Now if you are interested to move it, for example इस selected area के अंदर जो चीज़ थी उसको move करना चाहें, तो that's how you can select and move. Control D is for deselect. जल्दी से जाएं, इसी में मैग्नेटिक टूल है, एंड यू नो दैट कि मैग्नेटिक टूल बिल्कुल ऐसे ही काम करता है. ओके जी, द फोर्थ वन इज द क्विक सिलेक्शन टूल. क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर देयर इज अ मैजिक वॉन्ड टूल एज वेल एज द क्विक सिलेक्शन टूल. मैजिक वॉन्ड क्या करता था? फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सेलेक्ट these kind of things with the help of shift key press करें, and now you can select any pertinent color, correct? So that's how you can select. Let's suppose this one, create a new layer and let's fill something. Let's suppose I'm interested to fill anything, and alt backspace, and that's how you can fill it, and you can do any further experiment you are interested on. Lekin, let me delete this one. I'm not interested in this. I'm interested to go for the advanced magic wand के बाद नए फोटोशॉप में आने वाली इज अ क्विक सिलेक्शन टूल. क्लिक करें क्विक सिलेक्शन के ऊपर, आप जस्ट इसके ऊपर ड्रैग करें and automatically it will select. लेकिन in any such case if you see कि ये selection बहुत ज़्यादा out होगी, press the alt key and click इसके अंदर और click इसके अंदर and have a look at this. Absolutely exactly वही काम जो कि वो करता है, लेकिन ये बहुत क्विक करता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्विक सिलेक्शन टूल. नाउ द सेम थिंग, जिस तरह आपने कॉपी किया, पेस्ट किया एंड कलर चेंज किया, everything what you are interested you can do, right? So control D is for deselect. Fifth option is the crop tool. crop tool क्या करता है? किसी भी एरिया को सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, क्रॉप कर देगा. सो दैट मीन्स के अगर साइज बड़ा है, your required graphics is somewhere here and you are interested कि just उतना ही रिटेन रहे, so that is something which you can do, correct? So इसी के इसके अलावा there is another slice tool. Slice tool basically use होता है for the web development के लिए. So एज सच इतना इंपॉर्टेंट टूल नहीं है, इसलिए आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि मैं उसकी डिटेल आपको बताऊं. एंड देन दीज आई ड्रॉपर टूल इज फॉर quick selection of the color. For example, right now the selected color is red. For example, let me click here. So ये selection हो गया. Let me click on this dark blue color and have a look at this. ये selected color ये वाला आ गया. ठीक है. So you can just go and click on this clouds and you will find out कि ये वाले different quick selection के लिए ये बहुत easily and very easily you can do. अच्छा जी,
क्विक सिलेक्शन के अलावा देर आर वैसी बेसिक टूल, रूलर टूल क्या करता है, मैयर करता है, नोट टूल क्या करता है, फॉर एग्जांपल इफ यू इंटरेस्टेड कि किसी को ये नोट भेज दो, तो इसके साथ नोट्स आप लिखेंगे कि दिस इज समथिंग विच आई वांट कि इसको समथिंग लाइक दिस कुछ चेंज कर दें, सो दैट इज फॉर दैट पर्पस, करेक्ट। सो ये यहाँ पे अवेलेबल होता है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डिलीट दिस वन, क्लिक हेयर एंड डिलीट दिस, राइट। सो इतना एज सच इंपॉर्टेंट टूल ये काउंट टूल इज एग्जैक्टली कि इसमें पी और एस कितनी दफा आ रहा है, सो यू कैन जस्ट प्लेस कि दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, करेक्ट। इसके साथ आप वन के साथ आप नोट लिखते हैं, टू के साथ नोट लिखते हैं। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स एज सच, नॉट रिक्वायर्ड टू बी remembered or even don't worry about this. The third one, the seventh one was the patch tool, जो कि हमने जल्दी से किया था। पैच टूल क्या करता है? पैच टूल बेसिकली पैच क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे इस तरह नजर आए, सो लेट्स क्रिएट अ पैच, नो द डिफरेंट लेयर, ओके। So select this one and patch with this one. Okay, so now it is not complete. So let's create this one. Have a look at this. Done. It is as simple as that, ठीक है जी। So this is very interesting tool, you can use it. Brush tool क्या करता है? Brush tool simple, color को select करें, let's suppose कोई भी color, and then उसके अलावा the size that you have to choose, and for example जो color आपने pick किया यहाँ से, वो color हल्का हल्का place करना शुरू कर देगा, and that's what the whole aim of this brush is, करेक्ट। आप यहाँ से जाएं, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा डाउन कर दें, एंड देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर प्लेस करना शुरू कर दें, एंड हैव अ लुक एट दिस कि ये सॉरी ये इसके ऊपर क्योंकि ये इस तरह है इसलिए ये माइट नॉट बी विजिबल, सो नाउ इट विल बी विजिबल कि आप कोई भी ब्रश टूल से कोई कलर आप प्लेस करना चाहिए, यू कैन डू इट। पेंसिल टूल क्या करता है? सिंपल पेंसिल। अब आप पेंसिल का साइज छोटा करना है, लेट्स गो टू दिस साइज, and instead of 110 click on this one point and have a look at this one, करेक्ट। सो वेरी सिंपल पेंसिल टूल, एज सच कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल क्या करता है? आप जल्दी से अगर इसको स्टैम्प बनाना चाहते हैं समवेयर हेयर, विद द हेल्प ऑफ आल्ट की, प्रेस ऑन आल्ट की एंड प्रेस यहाँ पे करना चाहते हैं, रिलीज द आल्ट की मींस आल्ट की को छोड़ें, एंड हैव अ लुक एट दिस, ठीक है जी। सो दैट इज वेरी सिंपल in the cloud, something like this. That is something जिसकी details already share की जा चुकी हैं, and that is something which you can very easily review and create something like this. अच्छा जी, उसके अलावा that is the क्विक इरेजर टूल। क्विक इरेजर टूल क्या करता है? जल्दी से जाएं, क्विक इरेजर टूल जल्दी से सारा कुछ वाइप आउट कर देता है। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑफ दिस मच बिगर साइज, सो लेट वी क्रिएट दिस वन, और इतना भी छोटा नहीं, लेट्स सपोज अराउंड 75 एंड समथिंग लाइक दिस। लेकिन कीप इन माइंड कि ये बैकग्राउंड में जो कुछ होगा उसको भी साथ इरेज कर, correct। So that's another default of this. Lekin if you're interested to retain this, there are multiple tools other than this that you can do। Eraser tool के अंदर a background eraser tool है, for example you are interested to remove the background any, लेकिन उसके लिए it is mandatory कि ये सारा कुछ एक कलर में हो, तो दैट्स हाउ यू कैन रिमूव द बैकग्राउंड। अब जैसे ही मैं पी एस के ऊपर आऊंगा तो हैव अ लुक एट दिस कि ये क्या करेगा। इट इज़ इंटेलिजेंट कि ये खुद ब खुद से देखना शुरू करता है कि ओके, सो दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड कि ये वाला बैकग्राउंड, लेकिन अब क्योंकि इसका कलर और इसका कलर वाज ऑलमोस्ट लाइक सेम, तो देखिए इसने ये पी वाला ये भी इसमें वाइप कर दिया। लेकिन अदरवाइज अब आप सेंटर पे क्लिक करेंगे एंड हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस, ये पी और एस रिटेन रखा और बाकी सारा कुछ वाइप आउट हो गया। सो लेट मी अनडू दिस, एंड दैट्स द क्विकली अगर आप इरेज करना चाहते हैं, सो दैट इज easiest tool। Paint bucket tool is the most important one। Click here and have a look at this। पूरे के पूरे इस एरिया के ऊपर you can place the color। For example you are interested in कि मैं जल्दी से इसको करता हूँ off, इसको करता हूँ on, and let's create a fill color here somewhere and have a look at this। सारे के सारे selected area के ऊपर ये वाला color place हो गया। The other option is the gradient tool। Gradient tool usually into the complete slide as well as the selected area के अंदर चलता है। For example मैं इसी एरिया को select करता हूँ and let's create a new layer, और इसको करता हूँ off and let's put a gradient color here। लेकिन ये gradient color की सारी options variations आपके पास अवेलेबल है। Click here, यहाँ से जाके you can change the color, यहाँ से जाके you can change the color and the opacity also। if you're interested to fill in something like this, जो भी choose करना चाहते हैं pick करें alt की से straight उसको बिल्कुल रख कर drag करें and you find out that this gradient is applied, correct। so double दोनों साइडों पे अप्लाई करना चाहते हैं, सो इसकी फर्दर ऑप्शंस आर हेयर। लेट्स सपोज दैट इज रेडियल, दैट इज एंगल, दैट इज रिफ्लेक्टेड मींस ऊपर और नीचे एक जैसा, एंड दैट इज द डायमंड ग्रेडियंट। कोई इनमें से चूज करें एंड अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है जी। कंट्रोल डी इज फॉर डी सिलेक्ट,
उसके अलावा देयर इज अनदर, दैट इज दी ब्लर टूल. ब्लर टूल क्या करता है, किसी भी एरिया को ब्लर करना शुरू करता है. एज सिंपल एज दैट. लेट्स सपोज इफ यू हैव एनी पिक्चर, सो यू कैन ब्लर इट as well as you can sharpen it, as well as you can smudge it. Smudge क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्रॉपिंग में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होगी, तो हैव अ लुक एट दिस. ये जल्दी से आप थोड़ा सा बैक से एरिया को पिक करें और इसको ड्रैग करें, सिंपली ये इस तरीके से एक्सपैंड करना शुरू कर देगा. एंड बहुत मज़े मज़े की चीज़ें ये, क्योंकि आप आस्ता आस्ता एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट देयर आर सो मैनी टूल्स जो कि आपको ये फैसिलिटेट करते हैं. सो इसके अलावा दैट इज अनदर डॉज टूल. डॉज टूल एग्जैक्टली कुछ नहीं करता, लेकिन उसमें से इरेज करना शुरू करता है. ये एग्जैक्टली द इनवर्स ऑफ दिस मैच टूल है. जल्दी से अगर मैंने ये किया तो मैं थोड़ा सा इसमें से वाइप आउट करना शुरू कर दूंगा. सो पेन टूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला और कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, लेकिन एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू अंडरस्टैंड. स्ट्रेट लाइन से आप यूं करके शिफ्ट की से बिल्कुल स्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू क्रिएट एनी एंगल, सो विदाउट यूजिंग शिफ्ट की आप इसको ड्रैग करें एंड यू कैन क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ एंगल फ्रॉम दिस. लेट्स सपोज समथिंग लाइक दिस. Correct? So now that has been selected, control plus enter, and now the area has been selected. Create a new layer and fill any color जो भी आप चाहते हैं उसके अंदर. That's been done. So that is with the help of pen tool. इसके अलावा pen tool में there is a add anchor point or the delete anchor point, that is with the help of plus and minus short keys के साथ you can create. The next is the text tool. Text tool simple, click करें text के ऊपर, click करें on this artboard and you will find out कि it will give you the option to create a layers text on this panel. Let's suppose ये जिस तरह मैंने create किया and मैंने text लिखा, कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करें. लेट्स सपोज ओके, हियर वी गो. थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा था इसलिए परहैप्स इट वुड नॉट विजिबल, लेकिन कंट्रोल प्लस टी मींस ट्रांसफॉर्म करने के बाद यू कैन ब्रिंग इट इनटू द सेंटर एज वेल एज जिस भी लोकेशन के ऊपर यू कैन प्लेस इफ यू आर इंटरेस्टेड, जिस भी तरीके से. एंटर प्रेस करें एंड हियर वी गो. दैट्स इट. और उसके बाद नेक्स्ट हमने, दैट वाज द मूव टूल. इसके अलावा द लास्ट वन इज द रेक्टेंगल टूल. रेक्टेंगल सॉरी द शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स टूल्स. रेक्टेंगल टूल जो आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन राउंडेड रेक्टेंगल यू माइट नॉट बी एबल टू क्रिएट, फॉर एग्जांपल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड कि इतना ज़्यादा ना हो, सो दैट इज़ वेरी सिंपल. यू जस्ट गो टू दिस एंड इंस्टेड ऑफ 2 सेंटीमीटर आप इसको लेट्स मेक इट 1 सेंटीमीटर एंड नाउ क्रिएट समथिंग लाइक दिस. एंड जो भी इसमें कलर फिल करना चाहते हैं यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स. लेकिन इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज द कस्टम शेप्स, एंड दैट विच कम्स टू लेट्स सपोज ये वाली. इस पे क्लिक करें एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स of different, you can even download, you can even use any of them which is available. Just click here or drag from here, sorry, click here and draw anything on your artboard. Correct? सो इसमें जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं यहाँ से जाएं, जो कस्टम शेप पे क्लिक करें एंड हियर इज द कलर. लेट्स सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कलर, सो हियर वी गो, द कलर हैज बीन चेंज्ड. Correct? So that is the basic concepts, my dear students. With the help of hand tool, you can अगर ये आपका आर्ट बोर्ड इज लेट्स सपोज बिगर साइज, तो आप हैंड टूल से इसको मूव कर सकते हैं इधर इधर. एंड द शॉर्टकट की इज स्पेस बार. स्पेस बार को प्रेस करें एंड यू कैन rotate upward as well as to the downside. So control plus plus means zoom in, control plus minus means two keys, control and minus, you can zoom out. Correct? So that's control plus 0 is कि पूरी screen के ऊपर that will be visible. So that's it, my dear students. You can pick any color from these color palettes. Click here and you will find out thousand millions of colors. By the way, Photoshop says कि you have million of colors की options हैं. Color libraries पे जाएं and ये have a look at this. हर color का पूरा tone आपके पास available है. इसके अलावा here is the huge long list. आप इनमें से जो pick करके जो colors के palette लेके आना चाहें, that is something which you can do. ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर. सो इस तरीके से यू कैन कीप ऑन कंटिन्यूस फोटोशॉप एंड यू कैन लर्न एनीथिंग विद द बेसिक्स आज के लेक्चर के हिसाब से. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.